As Jammu and Kashmir continues to witness civilian killings, Union Home Minister Amit Shah will visit Rajouri district today and take stock of the security situation. Shah will arrive in Rajouri at 12 noon and is likely to meet the family members of the victims in the Rajouri terrorist attack. After meeting the families, Shah will also chair a key meet with officials in Jammu to review the security in the region. Now remember, Home Minister Amit Shah's visit comes days after 7 people were killed in the twin terror attacks in Rajouri. While 4 people were gunned down on January 1st, 2 children were killed and several others were injured after an IED blast occurred in the same vicinity on January 2nd morning. अमित शाह जो है जम्मू एक रोजा दौरे पे आ रहे हैं। डांगरी में वो फैमिली से मिलेंगे जो राजौरी किलिंग्स में जिनकी फैमिली चली गई उनसे मिलेंगे। वो उसके साथ साथ वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशंस को रिव्यू करेंगे। मीटिंग होने वाली है उनकी। क्या लगता है आपको इस दौरे से? देखिए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और मुझे खुशी है कि उनका फर्ज है आए, इन लोगों को देखें, इन पे जो कयामत गुजरी है, क्योंकि बहुत गरीब हैं वो जो राजौरी के लोग हैं, बहुत गरीब हैं। उनके सिर्फ दिलजोई के लिए ना आए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दें कि उसको गरीबी से निकाल सकें और सिक्योरिटी को और भी मुनज़्ज़म करें जिससे कि ऐसे वाक़ात ना हो। CNN News 18's Arunama is joining us to give us more details on this story. Arunama, what is the Home Minister's plan for today in Jammu and Kashmir? So he's scheduled to land around 11 o'clock, after which he'll move to Rajouri. That's the first program that he has in Rajouri. He will meet the family members. There has been a lot of anger on the ground. That is the feedback that has been given politically. The anger is because the terrorists responsible for the carnage, for the killing of 7, including 2 children, are still at large. And there is therefore that expectation from the Indian government, from the Jammu and Kashmir administration, to bring to justice those responsible for the act of terror. So Home Minister's visit will be to empathize with the grieving families and also to assure that the security agencies are doing all that it requires to bring the perpetrators to book. So that's the first part of his visit. The second part will be a meeting of the security grid. It's like a unified command meeting where all the agencies, the intelligence agencies, the defense forces, paramilitary, local administrative officials, Ministry of Home Affairs officials, they'll all get together and figure out this new challenge which has emerged. Intelligence seems to suggest that Jammu division is on the target of terror organizations like Lashkar, Jaish, TRF. So what is it that is required to safeguard Jammu? So far it was Valley which was facing the heat, but now are more boots on the ground required? How to really tackle the drone challenge that has emerged? All of that will be on the table when the security review meeting happens. Arunama, now that these targeted killings have reached Jammu as well, earlier this used to take place time and again in Kashmir, but now this has reached Jammu, which was earlier considered to be a safer region than the valley. So can we expect some big decisions to be taken in the key meet today? That's what I said, that on the table today will be discussions about whether you require more paramilitary forces. We are already seeing the village defense committees being equipped so that in far-off areas, this targeted killing in Rajouri that happened was in areas which are not very heavily populated. So the challenge is now whether do you deploy in every nook and cranny. That has its own limitations as well. Or do you equip people themselves? So that process has already begun. Arms and ammunition, guns, rifles being provided to VDCs, CRPF training them. But what else is needed to be done? And how do you tackle the constant inflow of guns, the constant inflow of drugs? Drones are being used to drop arms, ammunition, narco in Punjab and in Jammu. There's a new route that Pakistan has taken. So how do you really tackle that drone threat? That is also something that will have to be discussed. NSG already has an anti-drone mechanism there to bring it down, but it's an expensive mechanism. So what else needs to be done will be discussed and will be suggested to the Home Minister. Arunama, do we have any information about the terrorists that were involved in the Rajouri attack that took place on January 1st?
It is suspected that these terrorists were from Lashkar-e-Toiba, but there is not enough evidence for the police to come on record on that. All right, Arunima, we have Sameer Bhatt live from Rajouri with us. समीर, क्या सिचुएशन है रजौरी में? आज होम मिनिस्टर अमित शाह आने वाले हैं, क्या सिचुएशन अभी सामने आ रही है रजौरी में? देखिए, मैं आपको बता दूं, राजौरी की अगर हम बात करें, डांगरी इलाके में तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंच रहे हैं। और पहले वो तीनों जो फैमिलीज हैं, जो 3 घरों में जाएंगे जिनके 7 लोगों को शहीद किया गया था आतंकवादियों की तरफ से 1 जनवरी को। इसके लिए व्यापक सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं, सिक्योरिटी बीफ अप की गई है पूरे राजौरी में और खासकर डांगरी एरिया में जहां पे उनको जाना है। चप्पे चप्पे पे हमने सीआरपीएफ को देखा, पुलिस और बाकी एजेंसी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं चप्पे चप्पे पे डिप्लॉयड हैं और सख्त तरीन सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ट्रैफिक मूवमेंट को, क्योंकि ये जो डांगरी में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से यहाँ पे हालात जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं है। खासकर जो आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब हुए और अभी तक उनका पता नहीं है, उससे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में, रोष में। कल मैं शाम को गया था उनके पास, मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं कि 2 चीजें वो कह रहे हैं। एक तो ये कि जो आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने ये किलिंग्स की हैं, उनके अपने अपनों को मारा है, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम यूनियन होम मिनिस्टर से ये मांग करेंगे कि यहाँ पे जो वीडीसीज हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, उनको दोबारा से मजबूत किया जाए। वहां पे जो आर्म्स हैं, लोगों को वेपन्स दिए जाने चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उनको वेपन्स दिए जाने और ऑटोमेटिक जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो दिए जाने चाहिए, आधुनिक हथियार दिए जाने, ताकि वो जो आगे की चुनौतियां हैं, आगे के जो प्रॉब्लम्स हैं, आगे की जो चैलेंजेस हैं टेरर फ्रंट पे उसको वो डील करे। तो अमित शाह आएंगे और हालांकि इन्होंने फैमिली मेंबर्स ने ये भी कहा कि वो बहुत सेटिस्फाई हैं कि गृह मंत्री उनके पास खुद आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि वो इन लोगों के पास आएंगे, उनका दर्द शेयर करेंगे। तो लेकिन इनके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम तब तक हम सुख से नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, हमारे दिल में तब तक करार नहीं आएगा जब तक कि जो आतंकवादी इसमें मुलविस हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको मारा जाता है। उसके साथ साथ जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा है उनको भी बेनकाब करने की जरूरत है, उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। और जो एंटी टेरर फ्रंट पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें और ज्यादा सख्ती लाने की जरूरत है, और ज्यादा उसमें मजबूती लाने की जरूरत है, ताकि जो टेररिज्म को कुचल दिया जाए। तो एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट दौरा है अमित शाह का। यहाँ पे वो 11:30 से, जिस तरह मैंने कहा, 12 बजे हो सकता है, मौसम अगर ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी थोड़ा खराब है आज, हो सकता है वो डिले भी हो सकता है। लेकिन तीनों घरों में वो जाएंगे, क्योंकि पहले वो उस घर में भी जा सकते हैं जहां पे ऐसा कहा जा रहा है जिसने 3 भाई जो है उन्होंने अपने 4 बच्चों को खोया है, पहले वहां पे जाने का उनका प्रोग्राम है। लेकिन उस प्रोग्राम में चेंज भी हो सकता है। सिक्योरिटी के जो समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए।